अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे सिग्नल सिस्टम कोर्स के थर्ड लेक्चर के साथ जिसमें हम इवन साइनोसाइडल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर में। लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा करंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। आज 4 जून है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 4500 नए केसेस कोविड-19 के जो है वो आइडेंटिफाई हुई हैं और रफली 80 लोग जो हैं वो दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। सो पैनिक की तो ज़रूरत नहीं है, बट the situation is real, the problem is real. So I would advise to take very good care of yourself and your families. जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, अपने घरों में रहें। अगर आपका बाहर जाना बाज़ सिचुएशन में ज़रूरी है तो फेस मास्क जो है उसका इस्तेमाल करें और तमाम हिदायत जो हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से वक्तन फ़वक्तन आपको कन्वे की जाती हैं उन पे अमल दरामद करें। प्लीज़ एहतियात करें, ये आपके लिए और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट लेट्स नाउ फॉर्मली स्टार्ट आवर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स और साइनोसाइडल सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो बात की थी इम्पल्स फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन और रैंप फंक्शन के बारे में। जस्ट लाइक देम दीज सिग्नल्स जो कि साइनोसाइडल और एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स कहलाते हैं, दे आर आल्सो बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड दे आल्सो बिलोंग टू द कैटेगरी विच वी कॉल एलिमेंट्री सिग्नल्स। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे रियल वर्ल्ड के सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइनोसाइडल एंड exponential signals, and that makes the analysis of those signal very easy. So we should know कि what are complex exponential signals, कितनी different forms के complex exponential signals हमारे पास होते हैं, क्या उनकी properties हैं और किसी complex exponential signal को कैसे किसी sinusoidal signal किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है या वाइस वर्सा साइनोसाइडल को कैसे कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वी विल आल्सो टॉक अबाउट द पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सिग्नल्स। हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की भी बात करेंगे और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की भी बात करेंगे। तो इनमें से कब और कौन से पीरियाडिक होते हैं और इनकी पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके बारे में भी हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। सो होपफुली आफ्टर listening to this lecture you will be able to tell about the various forms of exponential signals which they take and also the sinusoidal signals and about their periodicity properties. So let's start our lecture. सो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स जो हैं, जो हमारे पास कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं, उनकी जो जनरल फॉर्म है, दैट जनरल फॉर्म इज गिवन बाय दिस xt in continuous domain. xt is c e raised to power at, where a is called complex frequency, and generally this a has a real part which is alpha and an imaginary part and complex part which is j omega naught. So alpha, which is the real part of this a, is called Napier frequency, which is rate of decrease or increase of the amplitude, and omega naught is the radian frequency, which tells us about the rate of oscillations, that how that complex exponential signal oscillates. So that information is provided by this omega naught, which is the radian frequency. So depending upon the value of a, there could be different cases for these exponential signal.
For example, the first case is the case where we called it a real exponential signal. A signal will be a real exponential signal if this C is real and if this A is equals to alpha and omega naught is equals to 0. So in that particular case, when C is real and A is equals alpha and omega naught equals 0, then such a signal is called a real exponential signal. In the next slide, I will tell you how the real exponential signal looks like. Then the second case is where we have A is j omega naught and alpha is equals to 0. So real part of this number, if that becomes equals to 0, then simply A is equals to j omega naught, and in that case it is called a complex exponential signal. And in for continuous domain, such a signal, which is a complex exponential signal, is always periodic. We will also talk about the periodicity properties of these signal in this lecture, but generally the continuous domain complex exponential signals are always periodic, and these complex exponential signals can be represented in the form of a sine or cosine signal. So they can be represented as sinusoids. We will also talk about their representation, how they can be represented as sinusoid. Then another case could be when the real part and imaginary part of this number A both are non-zero. So if that is the case, the last case is that alpha is non-zero, omega naught is non-zero. So in that case we have an exponentially varying sinusoid. We have a signal which exponentially varies for different values of A. So now let's talk about the first case. In first case, as I said, that C is real and A is equals to alpha, omega naught is equals to 0. So in this case, when C is real, A is alpha and omega naught is equals to 0, we have a real exponential signal. Now only it depends on the value of alpha, whether that would be a growing exponential or a decaying exponential or a constant. So generally, if alpha is positive, which means it is greater than 0, then we will get a signal which would be a growing exponential signal. Whenever alpha is greater than 0, as time t increases, this signal will also increase and it is a growing exponential signal. Similarly, if alpha is negative, then we will have a decaying exponential signal. As the time t progresses, this signal will decay, and if finally alpha is equals to 0, then we will have a constant signal for all values of t. So depending upon the value of alpha, whether it is greater than 0, less than 0 or equals to 0, we obtain a growing exponential, a decaying exponential or a constant signal respectively. The examples of growing exponential signal, which physical phenomenon in which growing exponential signal represent the physical phenomena of chain reactions in atomic explosions and complex chemical reactions, whereas the real world examples of decaying exponentials are radioactive decays of elements and response of RC circuits. Okay, so now let's talk about the second case. The second case is the one where we have alpha is equals to 0. So real part of that complex number A, which was alpha plus j omega naught. Now we have alpha is equals to 0. So when alpha is equals to 0, our signal simply becomes xt is e raised to power j omega naught t, which is called a complex exponential signal. This complex exponential signal, continuous time complex exponential signal, will always be periodic with a fundamental period 2 pi over omega naught. There are a number of differences between continuous time signals and discrete time signals, and one such difference is that the
continuous time complex exponential signal are always periodic, whereas discrete time complex exponential signals may or may not be periodic. There are some conditions under which a discrete time signal will be a periodic, but sometimes discrete time complex exponential signal will not be periodic. We will talk about that condition very soon, but this is just a difference between continuous time complex exponential signals and discrete time and complex exponential signals, that continuous time complex exponential signals are always periodic, whereas discrete time complex exponential signals may or may not be periodic. So if you want to prove why and how the complex exponential signal is periodic, let's suppose we have a signal xt e raised to power j omega naught t. So according to the definition of periodicity which we discussed in the last lecture, this signal xt will be periodic if and only if xt is same as x of t plus capital T. So it means what we want, that e raised to power j omega naught t must be same as e raised to power j omega naught t plus capital T. So basically what we want, that e raised to power j omega naught, because there is a plus sign, so this could be written as e raised to power j omega naught t plus e raised to power j omega naught capital T. So हम ये चाहते हैं कि ये जो चीज़, ये क्वांटिटी है e raised to power j omega naught t जो है ये 1 हो जाए। अगर ये 1 हो जाएगी तो फिर ये दोनों साइड पे आपके पास सिग्नल जो है वो सेम हो जाएगा। सो ये e raised to power j omega naught capital T कब 1 होगा, ये e raised to power j omega naught t जो है वो तब 1 होगा when omega naught into t will be equals to 2 pi। जब ओमेगा नॉट टी का जो प्रोडक्ट है, ये दिस ओमेगा नॉट टी टर्म, इफ दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई, e raised to power j 2 pi will be equals to 1. Why? Because e raised to power j 2 pi is cosine 2 pi plus j sine 2 pi according to the Euler's relation, and cosine of 2 pi is 1 and sine of 2 pi is 0. So that's why के e raised to power j omega t 1 हो जाएगा। So इसका मतलब ये है कि condition for periodicity is that omega naught t must be equals to 2 pi. So from here you can find the time period t of a complex exponential signal, and that comes out to be 2 pi over omega naught. So a continuous time complex exponential signal is always periodic with fundamental period t, which is 2 pi over omega naught. Now let's talk about harmonically related complex exponential signals. Harmonically related means, okay, let's suppose we have a set of signal phi kt which are given like this, e raised to power j k omega naught t. If we put different values of k over here, for example, if we put k as 1, this will be e raised to power j omega naught t. If we put k is equals to 2, this will become e raised to power 2j omega naught t. If we put k is equals to 3, it will become e raised to power 3j omega naught t. So all of these signals will be related. And why they are related? Because all of these signals are multiple of a fundamental frequency omega naught. So omega naught is a fundamental frequency. For value of k is equals to 1, we get e raised to power j omega naught. 2 omega naught will be twice that fundamental frequency, 3 omega naught will be thrice that fundamental frequency, and so on and so forth. So all of these signals which are integer multiple of fundamental frequency omega naught, they are called harmonical, a set of harmonically related complex exponential signals, and they are very important. In our course we have to discuss a chapter which is about Fourier series and Fourier transform, and there you will see we will use such type of signals which are harmonically related complex exponential signal. So in short, we may represent any signal, any periodic signal, with the help of Fourier series by a set of harmonically related complex exponential signals. So they are
mostly used in Fourier analysis to represent any arbitrary signal x of t which is periodic. If it is periodic, it will be represented by Fourier series. If it is aperiodic, it will be represented by Fourier transform. But these elementary signals, which are harmonically related complex exponential signals, are important in that domain, in the Fourier domain, where we will be going to where we will be going to represent any arbitrary signal with the help of these complex exponential signals. An example of these harmonically related complex exponential signals are the tones which results from variations in acoustic pressure at frequencies that are integer multiples of fundamental frequency. So basically, if you are asked that what are harmonically related complex exponentials, so the answer should be harmonically related complex exponential signals are those signals which are integer multiple of some fundamental frequency omega naught. So 2 omega naught, 3 omega naught, minus 2 omega naught, minus 3 omega naught, all integer multiples of some fundamental frequency omega naught are called the harmonically related complex exponential signals. Now, let's talk about the sinusoidal signals. You may already know that these complex exponential signals and sinusoidal signals are closely related to each other. You can transform a sinusoidal signal to a complex exponential signal, or a complex exponential signal to a sinusoidal signal. So let's see what is the general form of a sinusoidal signal. A general form of a sinusoidal signal is given like this: x of t is a cosine omega naught t plus phi. Here a is the amplitude of the signal, omega naught is the fundamental frequency, and phi is the phase of that signal. This omega naught is, which is the fundamental frequency, is 2 pi f or 2 pi over t if you are talking about the time period t. So if you have a periodic signal, then that periodic signal has some fundamental time period which is t, and this omega naught is 2 pi over t. Yeah, or in other words, you can say t is 2 pi over omega naught. So this signal, just like complex exponential signal, this sinusoidal signal, continuous time sinusoidal signal, is also periodic, always periodic, with a time period t which is 2 pi over omega naught. And an example of such a sinusoidal signal is the response of an LC circuit. An LC circuit has a response which is in the form of this sinusoid. Similarly, acoustic pressure variations which responds to a single musical tone, they are also the example of a sinusoidal signal. So this is the general form of a sinusoidal signal. In the next slides, we will talk about the conversion from a complex exponential signal to a sinusoidal signal and vice versa. Okay, so now let's talk about how can we convert a complex exponential signal to a sinusoidal signal. For that, we use that famous Euler's relation with which you may already be familiar with. So Euler's relation states that e raised to power j omega naught t plus phi is cosine omega naught t plus phi plus j sine omega naught t plus phi. And similarly, e raised to power minus j omega naught t plus phi is cosine omega naught t plus phi minus j sine omega naught t plus phi. So using this relationship, Euler's relationship, we can convert a complex exponential signal. Yeah, or you can say more precisely, you can represent a complex exponential signal from one representation to another representation. So these representations are interchangeable. आपके पास अगर complex exponential signals हैं तो आप उनको sinusoids में represent कर सकते हैं, या अगर आपके पास sinusoidal signals हैं तो आप उनको complex exponential signal में represent कर सकते हैं. For example,
अगर आप इन दोनों सिग्नल्स को ऐड कर दें e रेज़ टू पावर j ओमेगा नॉट t प्लस फाई और e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t प्लस फाई, अगर आप इन दोनों सिग्नल्स को आपस में ऐड कर दें तो इनकी एडिशन का रिजल्ट ये होगा, ये जो इमेजनरी टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी। सो यू विल गेट 2 कोसाइन ओमेगा नॉट t प्लस फाई इज इक्वल्स टू this, and cosine omega naught t plus phi will then be equals to 1 over 2 or say a over 2 e raised to power j omega naught t e raised to power j phi plus e raised to power minus j omega naught t e raised to power minus j phi। सिमिलरली अगर आप इनको ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कोसाइन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और रेस्ट यू विल गेट माइनस 2j साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाई। सो अगर आप माइनस 2j को इधर डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाई। सो इजीली यू कैन कन्वर्ट एनी complex exponential signal to a sinusoidal signal and vice versa. One more representation which you normally will see in books, that sometimes it is written like this: a cosine omega t plus phi is a real part of e raised to power j omega t plus phi, because e raised to power j omega t plus phi was equals to this cosine omega t plus phi plus j sine omega t plus phi. If I say what is the real part of this e raised to power j omega t plus phi, so real part is this one cosine omega t plus phi, so that's why it is written as a real part of e raised to power j omega t plus phi. And if I ask you what is the imaginary part of this, so imaginary part of this is sine, so sine omega t plus phi is a into imaginary part of e raised to power j omega t plus phi. Next, now let's talk about the third case. We have talked about the two cases depending upon the value of a. Remember that a was equals to alpha plus j omega. So first case was when omega is equals to 0 and a is equals to alpha. So that was the case of a real exponential signal. Next we talked about when alpha is equals to 0, so a is simply equals to j omega, which is called a complex exponential signal. Now the third case is a is equals to alpha plus j omega and neither alpha nor omega is equals to 0. So both of them are non-zero. So let's see what would be the form or shape of a complex of an exponential signal when both real part and imaginary part are non-zero. So if both of them are non-zero, then we will have a signal which will be either a damped sinusoidal signal like this or a growing sinusoidal signal like this. So it depends upon the value of alpha. If alpha is less than 0, then we will have a damped sinusoid signal. Remember, a sinusoid signal, normal sinusoidal signal has constant amplitude, so it only oscillates between +1 and -1. However, in this case, if you have such a signal where alpha is non-zero and alpha is, for example, less than 0, then you will get a damped sinusoidal signal. This damped sinusoidal signal will go to lose its amplitude with the passage of time. So आहिस्ता आहिस्ता इसका amplitude जो है वो कम होता जाएगा. And if alpha is greater than 0, then you will get a growing sinusoidal signal जिसका amplitude जो है वो with the passage of time increase करता रहेगा. So अगर आपके पास ये थर्ड जो टाइप है, इसमें जब हमारे पास अल्फा भी ज़ीरो नहीं होता और जो है ओमेगा है वो भी ज़ीरो नहीं होता, तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल आता है वो या तो डैम्प्ड साइनोसाइडल सिग्नल होता है या ग्रोइंग साइनोसाइडल सिग्नल होता है. सो समटाइम्स इन दिस कोर्स वी विल आल्सो टॉक अबाउट देम एज वेल. Now, let's talk about the periodicity properties of these exponential signals. These exponential signals, as I said, are always periodic. So, periodic तो ये हमेशा होंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या ये जो सिग्नल्स हैं, जो complex exponential signals हैं, क्या आपके पास ये एनर्जी सिग्नल्स हैं या
पावर सिग्नल है। सो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स आर जस्ट लाइक आर अ सम ऑफ अ कोसाइन एंड अ साइन। तो कोसाइन और साइन आपको पता है कि वो हमेशा पीरियाडिक होते हैं, सो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल भी पीरियाडिक होंगे। नाउ विद पीरियाडिक के साथ हमने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, इफ़ यू रिमेंबर, कि हमारे पास सिग्नल में कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कहलाते हैं एनर्जी सिग्नल्स, और कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कहलाते हैं पावर सिग्नल्स। सो एनर्जी सिग्नल्स और पावर सिग्नल्स में से किस कैटेगरी में हमारे ये सिग्नल फॉल करेंगे जो कि कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स कहलाते हैं। चूँकि ये पीरियाडिक हैं और हमने एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल की डिस्कशन में ये बात की थी कि आपके पास जो पीरियाडिक सिग्नल्स होते हैं दे आर ऑलवेज पावर सिग्नल्स। सो चूँकि ये भी पीरियाडिक सिग्नल हैं तो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स जो हैं दे विल बी पावर सिग्नल, एंड देयर पावर इज डिफाइंड बाय दिस रिलेशनशिप। in one period we will integrate this e raised to power j omega naught t square, और उसको हम ट्वाइस इस टाइम पीरियड से डिवाइड करते हैं तो देयर वी विल गेट द पावर ऑफ दैट सिग्नल। सो देयर पावर इज finite, and when their power is finite it means their energy would be infinite. So all complex exponential signals, since they are periodic, so that's why they will be power signals. Okay, so this was for the continuous time case up till so far, but now we are going to discuss the discrete time, their discrete time counterparts, discrete time complex exponential and sinusoidal signals. Discrete time complex exponential and sinusoidal signals take this form: x of n is c alpha raised to power n, where c and alpha are in general complex number. So alternatively you can also write that alpha is e raised to power beta, so then we can write x of n is c e raised to power beta n. Depending upon the value of c and alpha, they have different characteristics, just like the continuous time complex exponential signals. So for example, if both c and alpha are real, then the signal will be a real exponential signal. Real exponential signal, and it depends upon the value of alpha. If alpha is greater than 1, for example in this case, then signal will be a growing exponential. As the value of n increases, the amplitude of the signal is going to increase. And if alpha is between 0 and 1, then the signal will be a decaying exponential. With the value, as the value of n increases, the amplitude of the signal will decrease. And if alpha is between 0 and -1, then the signal is decaying exponential, but its signs alters. It means that one value would be positive, other would be negative. This is positive, this is negative, next positive, next negative. So the sign alters, sign changes. So one value would be positive, other value, next value would be negative, next will be again positive, and but it would be a decaying exponential. The value is going to decrease with the passage with the time n. And if alpha is less than 1, then the sign will alter, again positive, negative, positive, negative. But now if alpha is less than 1, then that would be a growing exponential signal. So these are 4 different cases when c and alpha are real. You will have a real discrete time exponential signal, but whether it is a growing exponential or decaying exponential, whether its signs will remain same or its sign will change, that depends upon the value of alpha. So there are 4 different cases. If alpha is greater than 1, we have a growing exponential. If alpha is between 0 and 1, we have a decaying exponential. If alpha is between -1 and 0, we have a growing exponential. We have a decaying exponential, but its sign changes. And if alpha is less than -1, we have a growing exponential with the sign change. Okay, now let's talk about the famous discrete time exponential, which is called discrete time complex exponential. We are more interested in the study of this course not in real exponential signals, but
इन कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। जो हमने 3 केस डिस्कस किए थे, एक रियल एक्सपोनेंशियल, एक कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल और एक वो केस जिसमें आपके पास ना तो रियल पार्ट ज़ीरो होता है और ना ही इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होता है। इसमें जिस केस में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो ये वाला केस है जो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल कहलाता है, चाहे वो डिस्क्रीट टाइम में हो या कंटिन्यूस टाइम में हो। सो discrete time complex exponential signal is given by this: x of n is e raised to power j omega naught n. Omega naught is here fundamental frequency of that signal, but a difference is that कि ये जो ओमेगा नॉट है, this signal will have the same frequencies at omega naught plus minus 2 pi, omega naught plus minus 4 pi, and so on so forth. So any multiple of 2 pi will give you the same frequency. This was not the case for continuous time case. So this is again a difference between continuous time signals and discrete time signal, that in discrete domain there is the frequencies are only distinct in an interval of 2 pi. Please remember this statement, this is important. In discrete domain only distinct frequencies only exist in an interval of length 2 pi. इससे बियॉन्ड जो भी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो पहले भी कहीं ना कहीं आपके पास आ चुकी होंगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज रिटन ओवर हियर. In discrete time complex exponential signals, we need only consider a frequency interval of length 2 pi in which to choose omega naught, because distinct frequencies are only present in an interval of length 2 pi. 2 pi से beyond ये सब कुछ फिर दोबारा से repeat होना शुरू हो जाता है, because omega naught will be same as omega naught plus 2 pi, ठीक है, or omega naught plus 4 pi or any integer multiple of 2 pi. So जब हमारे पास as we increase the frequency omega naught from 0, तो हमारे पास जो oscillations हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं. ये oscillations जो इंक्रीज है, this remains until omega naught is equals to pi. The highest frequency is in a discrete time signal is the pi frequency. और जैसे ही हम pi से beyond जाते हैं towards 2 pi, again the oscillations become decreasing. So 0 से pi तक oscillations जो हैं they increase, and as we move from pi to 2 pi the oscillation again decrease, and at 2 pi we have at 2 pi is point is same as the 0 point. So 2 pi के बाद दोबारा से वही साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है. सो लो फ्रीक्वेंसी किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में लो फ्रीक्वेंसीज वो होती हैं जो स्लोली वेरिइंग हो. दे आर दोज फ्रीक्वेंसीज विच आर नियर 0 एंड आर 2 pi, because 0 and 2 pi are the same points or any other even multiple of pi. High frequencies discrete time signals में वो होती हैं which are near pi or minus pi or any odd multiple of 3 pi, like 3 pi, 5 pi, 7 pi. Any odd multiple of pi would be the frequency which will be highest frequency in that discrete time signal, and whereas the lowest frequencies are the frequencies which are at omega is equals to 0 or at omega is equals to 2 pi or 4 pi and so on so forth. So for discrete signals we are only interested in an interval of length 2 pi, और उसमें 0 से पाई तक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगी, पाई से 2 पाई तक दोबारा फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएंगी. सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. Another important difference is that discrete time signals will only be periodic if this omega naught over 2 pi is a rational number. If omega naught over 2 pi is not a rational number, then a discrete time complex exponential signal will not be periodic. This is in contrast to its continuous time counterpart, because continuous time complex exponential signal is always periodic, whereas discrete time complex exponential signal may or may not be periodic.
ये पीरियाडिक होगा अगर आपके पास जो ओमेगा नॉट ओवर 2 पाई है दैट इज अ रैशनल नंबर. If you are unable to find a rational number, omega naught over 2 pi is not a rational number, then the discrete time signal will be aperiodic. In the next slides, see some examples जिसमें हमारे पास continuous time complex exponential और discrete time complex exponential की periodicity को discuss करेंगे. So there you can see कि हमारे पास कंटिन्यूस टाइम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल तो हमेशा जो है वो आपके पास पीरियाडिक होता है, लेकिन डिस्क्रीट टाइम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल उस सिचुएशन में पीरियाडिक नहीं होगा व्हेन दिस क्वांटिटी ओमेगा नॉट ओवर 2 पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर. इसका रैशनल नंबर होना ज़रूरी है पीरियाडिक होने के लिए. Okay, so before going to discuss those examples, let's talk about one more thing जिसके बारे में हमने continuous domain में भी बात की थी, which are harmonically related complex exponential signals. Harmonically related complex exponential signal are similar, which we have already discussed for continuous time case. Phi k of n is e raised to power j k omega naught n. For different values of k, like plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, you obtain discrete time signals which are harmonically related to this fundamental frequency omega naught, because those signals will have an integer multiple of this frequency. अगर आप k को 2 पुट करेंगे तो e raised to power 2j omega naught signal will have a frequency which is integer multiple of fundamental frequency omega naught. Similarly 3, 4, 5 कोई भी integer value put करें तो these signals will be harmonically related to this signal e raised to power j omega naught t. In fact they are in frequency, they are integer multiples, so they are harmonically related. Now discrete time sinusoidal signal has same form as continuous time sinusoidal signal. x of n is a cosine omega naught n plus phi. और अगर आप इसको भी आयलर्स रिलेशनशिप अगर आप यूज़ करें e raised to power j omega naught n where cosine omega naught n plus j sin omega naught n, तो आप आसानी से इनको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. यानी अगर आपके पास कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है तो आप उसको साइनोसाइडल सिग्नल में चेंज कर सकते हैं, या अगर आपके पास साइनोसाइडल सिग्नल है तो आप उसको कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल में चेंज कर सकते हैं. दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली सिमिलर एज दे वर इन द कंटिन्यूस डोमेन. सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे कंटिन्यूस डोमेन में यहाँ पे वेरिएबल जो है वो t था, e raised to power j omega naught t which was cosine omega naught t plus j sin omega naught t, और यहाँ पे वो वेरिएबल n है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है. सो ये रिलेशनशिप एग्जैक्टली सिमिलर है डिस्क्रीट डोमेन में भी और कंटिन्यूस डोमेन में भी, एंड यू कैन कन्वर्ट यूजिंग दीज रिलेशनशिप्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. Okay, so just like the continuous time case, जब आपके पास अल्फा भी नॉन ज़ीरो हो और ओमेगा नॉट भी नॉन ज़ीरो हो, तो आपके पास कंटिन्यूस डोमेन में भी हमारे पास एक ग्रोइंग साइनोसाइड या डिकेइंग साइनोसाइड सिग्नल हमें मिलता था. सेम इज़ द केस ओवर हेयर. अगर आपके पास डिस्क्रीट डोमेन में भी जो अल्फा भी नॉन ज़ीरो हो और ओमेगा नॉट भी नॉन ज़ीरो हो, तो आइदर वी विल गेट a growing discrete time sinusoid or a decaying discrete time sinusoid. So just this is for sake of completeness, otherwise we are only interested in with respect to this course in complex exponential signal, purely complex exponential signal where alpha is equals to 0 and a is simply equals to j omega naught. Okay, now let's talk about a few examples of the periodicity properties of these continuous time and discrete time complex exponential signals. So let's suppose we have an example, x of n is cosine 2 pi n over 12. So हम ये डिस्क्रीट वर्जन है और इसी का सेम जो कंटिन्यूस वर्जन है x t is cosine 2 pi t over 12. You remember that t is given as 2 pi over
ओमेगा नॉट। सो अगर आपके पास दिस इज वी कैन राइट दिस एज कोसाइन ओमेगा नॉट इनटू टी वेयर ओमेगा नॉट इज 2 पाई ओवर 12। सो यहाँ पे आपके पास ओमेगा नॉट 2 पाई ओवर 12 है। सो अगर आप टी फाइंड करें, टी इज 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट, तो इसका जो टी आएगा, टी नॉट आएगा, दैट वुड सिंपली बी इक्वल्स टू 12। इसी तरह से अगर हम डिस्क्रीट की बात करें तो डिस्क्रीट में भी मोर और लेस यही चीज़ है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि डिस्क्रीट के केस में ये जो एन नॉट होगा दिस विल बी m2 पाई ओवर ओमेगा नॉट। 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट तो वही है जो आपके पास कंटिन्यूस में भी होता है, लेकिन साथ आपके पास एक वैल्यू ऑफ m जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेक्स्ट एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि m की कुछ ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए ये n नॉट जो है वो इंटीजर आएगा। तो n नॉट सिर्फ वही एक्सेप्टेबल है जब वो इंटीजर हो। अगर n नॉट इंटीजर ना हो तो ऑब्वियसली डिस्क्रीट के केस में अगर वो इंडेक्स आपके पास इंटीजर नहीं है तो डिस्क्रीट सिग्नल उसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो इस वजह से आपके पास इस n नॉट का इंटीजर होना ज़रूरी है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस टाइम केस एंड डिस्क्रीट टाइम केस। सो बाज़ केसेस में हम आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स में, इस एग्जांपल में तो खैर सिमिलर है, इस केस में तो आपके पास जो ये है ये भी आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, कोसाइन ऑफ ओमेगा नॉट n, ओमेगा नॉट इज़ 2 पाई ओवर 12। ठीक है, सो यहाँ पे आप 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई ओवर 12 करेंगे तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो ये m इंटू 12 आ जाएगा। अब m की आपने कोई भी एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि सो दैट कि ये n नॉट इंटीजर हो जाए। सो यहाँ पे तो 12m है तो m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n नॉट जो है वो इंटीजर आ जाएगा एंड दैट पीरियड इज सेम एज n नॉट इज 12। लेकिन बाज़ केसेस में m की वैल्यू 1 पुट करने से यहाँ पे आपके पास ये इंटीजर नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बेसिकली इसको इलस्ट्रेट करेगी, बट एट द मोमेंट यू मस्ट रिमेंबर के डिफरेंस सिर्फ ये है कंटिन्यूस टाइम केस में और डिस्क्रीट टाइम केस में कि कंटिन्यूस टाइम केस तो जो भी होगा कंटिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल वो पीरियाडिक होगा। उसका पीरियड फाइंड करने का तरीका ये है कि आप 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट कर दें। ओमेगा नॉट ये चीज़ होती है जो कुछ भी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज ओमेगा नॉट विच इज़ 2 पाई ओवर 12 इन ओवर हेयर। सो टी नॉट फाइंड करना है तो 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट करते हैं, दैट वुड बी द पीरियड ऑफ दैट कंटिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। डिस्क्रीट के केस में रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, ये 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट वही है जो कंटिन्यूस के केस में है, बट सम टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद m इन ऑर्डर टू मेक दैट n नॉट एज इंटीजर। क्योंकि डिस्क्रीट के केस में पीरियड किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का सिर्फ वही हो सकता है जो एक इंटीजर वैल्यू हो। नॉन इंटीजर वैल्यू जो है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का पीरियड नहीं हो सकती। Okay, so this example will illustrate that point. So here we have two signal, x of n is cosine 8 pi n over 31 and x of t is its counterpart signal in the continuous domain is cosine 8 pi t over 31. So as I told you, this is your omega naught 8 pi over 31. You can write it cosine omega naught t. So अगर आपने पीरियड फाइंड करना है तो पीरियड फाइंड करने का तरीका ये है, टी नॉट इज़ 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट, सो 2 पाई डिवाइडेड बाय 8 पाई ओवर 31, सो दिस विल बिकम 31 ओवर 4। सो ये तो वही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने जस्ट 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट किया तो आपके पास ये पीरियड आ गया 31 ओवर 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रीट वर्जन ऑफ दिस। डिस्क्रीट वर्जन में भी अगर हम इस तरह से करें 2 पाई ओवर जो आपने हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट, सो दिस बिकम्स 2 पाई ओवर 8 पाई ओवर 31, सो बेसिकली इट बिकम्स 31 ओवर 4 in 31 over 4 it becomes, but 31 over 4 is not in an integer. सो हमें क्या चाहिए, हमें इंटीजर चाहिए। सो इस वजह से जो उसके साथ हम m मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ से हमें m की एक ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है सो दैट दिस n नॉट बिकम इंटीजर।
सो अगर आप सिर्फ ये वैल्यू पुट कर रहे हैं 8 पाई ओवर 31, 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट करेंगे तो आपके पास ये आएगा 31 ओवर 4। नाउ यू हैव टू चूज सम वैल्यू ऑफ m, और आप वैल्यू ऑफ m जो चूज़ करेंगे ऐसी चूज़ करेंगे कि जो इस n नॉट को इंटीजर बना दे। चूँकि हमारे पास 31 ओवर 4 था तो हम m की वैल्यू अगर 4 चूज़ करें तो ये n नॉट जो है ये आपके पास 31 आ जाएगा। एंड दैट इज़ द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस discrete time sinusoidal signal. So this, I hope this example will have made it clear for you कि ये जो difference है slides का वो क्या है। कंटिन्यूस के केस में आपके पास जो सिग्नल होता है वो जो भी उसका ओमेगा नॉट हो, आप जस्ट उस ओमेगा नॉट को 2 पाई से डिवाइड करें, यू विल गेट टाइम पीरियड। लेकिन डिस्क्रीट के केस में आप डिवाइड तो वो करते हैं, यहाँ पे भी हमने 2 पाई को डिवाइड तो किया 8 पाई ओवर 31 से, लेकिन मोर ओवर हमें उसे इंटीजर भी बनाना था, क्योंकि डिस्क्रीट के केस में पीरियड सिर्फ वही हो सकता है जो इंटीजर हो। सो उसे इंटीजर बनाने के लिए हम उसे m से मल्टीप्लाई करते हैं। m की कोई वैल्यू ऐसी आपने चूज़ करनी है जो उसको इंटीजर बना दे। सो 31 ओवर 4 है तो इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटीजर बन जाएगा। सो m की वैल्यू जो डिस्क्रीट के केस में आपने चूज़ की दैट वाज 4। नाउ लेट्स टॉक टू अनदर केस। अब इस केस में हमारे पास दो सिग्नल हैं, उसी तरह से जिस तरह से आपके पास डिस्क्रीट वर्जन है सेम वही जो है वो आपके पास कंटिन्यूस वर्जन है। दोनों साइनोसाइडल सिग्नल्स हैं। एक्स एफ एन इज कोसाइन एन ओवर 6 एंड एक्स एफ टी इज कोसाइन टी ओवर 6। सो लेट्स सी कि क्या ये पीरियाडिक होंगे या पीरियाडिक नहीं होंगे। सो अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो मैंने कहा टी के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज़ योर ओमेगा नॉट। सो योर ओमेगा नॉट हेयर इज़ 1 ओवर 6। और आप टी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट करते हैं। सो 2 पाई को जब डिवाइड करेंगे 1 ओवर 6 से, सो यू विल गेट 12 पाई विच इज़ द पीरियड ऑफ योर continuous time sinusoidal signal. Now let's talk about the discrete time sinusoidal signal. Again you have the similar thing, cosine of n over 6. So this you can write it as cosine omega naught, and omega naught here is 1 over 6. So to find period we get n naught is 2 pi over omega naught. अब 2 pi को हम 1 over 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास 12 पाई आता है। बट नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम। 12 पाई जो है दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर। सो डिस्क्रीट सिग्नल कैन नॉट बी पीरियाडिक व्हेन इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट जब रैशनल नंबर नहीं होगा, आप बेशक आप इसको जिस m से भी मल्टीप्लाई करते रहें, बिकॉज m की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 हो सकती है। 12 पाई को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, 4 से करें, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ रैशनल नंबर. So that's why this would be now a periodic signal. So this, please keep in mind that continuous time sinusoidal or exponential signal are always periodic with the period t naught, which is 2 pi over omega naught, but discrete time signals may or may not be periodic. A discrete time signal can only be periodic if 2 pi over omega naught is a rational number. If 2 pi over omega naught is an irrational number, like here we got 12 pi, so then that signal cannot be periodic. So this is a difference which you must keep in mind. Okay, so now another example, you can do it as a homework. This is very easy, nothing difficult. Just here we have two signals instead of one. जब हमारे पास दो signals होते हैं तो ये for example you can say this is omega 1 and this is omega 2. So इनका आपने जो है वो period find करना है। इनके period find करने का तरीका ये है कि जो इनकी frequencies हैं omega 1 और omega 2, we will take an LCM of that, और उसी तरह से फिर t pi over 2 t is equals to 2 pi over omega naught वाले फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल इन योर बुक। ओपनहाइम की जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर ये एग्जांपल मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। सो सम ओके, सो लेट्स
talk about the periodicity properties of discrete time signal. So discrete time signal के केस में जैसा कि एक दो अहम बातें जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस भी की है उनको ज़रा दोबारा से एक दफ़ा बात कर लें कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की ऑसिलेशन रेट है वो इंक्रीज करता है इन द इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई। ज़ीरो से जब ज़ीरो फ्रीक्वेंसी से आप पाई फ्रीक्वेंसी तक जाएंगे तो रेट ऑफ ऑसिलेशन जो है दैट विल इंक्रीज, और जब आप पाई से 2 पाई जाएंगे तो फिर वो रेट ऑफ ऑसिलेशन दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज आर ओनली प्रेजेंट इन एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। 2 पाई के इंटरवल से बाहर जब आप जाएंगे तो वही फ्रीक्वेंसीज पहले वाली रिपीट हो रही होंगी। ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है। द डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल विद फ्रीक्वेंसीज सेपरेटेड बाय 2 पाई आर सिमिलर। ठीक है, thus for discrete time exponential signal it is sufficient to use the interval 0 to 2 pi. So this you must keep in mind that discrete signal के लिए सिर्फ we are only interested in an interval of length 2 pi, और ये इंटरवल जो है ये 2 पाई इसकी लेंथ होनी चाहिए। इंटरवल कुछ भी हो सकता है, 0 से 2 पाई भी हो सकता है, माइनस पाई से पाई भी हो सकता है, पाई से 3 पाई भी हो सकता है। सो एनी इंटरवल ऑफ लेंथ जिसकी लेंथ जो है वो 2 पाई है दैट वुड बी सफिशिएंट टू कंसिडर अ डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ओके, सो आज के लेक्चर में जो कुछ हमने डिस्कस किया अगर उसको हम ब्रीफली यहाँ पे उसकी बात करें कि क्या मेन पॉइंट्स हैं। सो मेन पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट सिग्नल्स for continuous time case, distinct signals for distinct values of omega naught। ठीक है, सो जैसे जैसे कंटिन्यूस टाइम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की अगर हम बात करें आप ओमेगा नॉट की डिफरेंट वैल्यूज चूज करते रहेंगे तो यू विल गेट distinct signals, you will get those signals which are distinct in nature and they are always periodic for any choice of omega naught। omega naught की कोई भी आप वैल्यू ले लें तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हमेशा पीरियाडिक होता है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज ओमेगा नॉट कंटिन्यूस टाइम की, और इसका टाइम पीरियड जो है दैट इज 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट। नाउ इफ वी कंपेयर दिस थिंग with discrete time signal, so discrete time signal में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि we have identical signals for values of omega naught separated by multiple of 2 pi। तो वहाँ पे ज़ीरो फ्रीक्वेंसी से लेके इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी तक आपके पास कंटिन्यूस में सारी फ्रीक्वेंसीज डिस्टिंक्ट हैं, उनमें कोई सिमिलर फ्रीक्वेंसीज नहीं है कंटिन्यूस केस की अगर आप बात करें। लेकिन डिस्क्रीट में क्या है कि हर 2 पाई के इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। सो वी ओनली हैव डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज इन एन इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई। सो इट्स पीरियडिसिटी की अगर बात करें तो इट वुड बी पीरियडिक इफ एंड ओनली इफ वी हैव omega naught is 2 pi m over n for some n is greater than 0 and some integer value of m। एक एग्जांपल हमने की जहाँ पे इसी लेक्चर में आपने देखा कि हमने m की वैल्यू जो है वो 4 चूज की तो तब वो जाके उसका पीरियड जो है वो इंटीजर बना और दैट was the period of that particular signal। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट ओवर m और इसका फंडामेंटल पीरियड वही m 2 pi ओवर ओमेगा नॉट। Okay, so this is some practice problems for you to work 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.1, 25, 126 and all of these practice problems are from the book of Oppenheim। So ये उसी बारे में है complex exponential signals, sinusoidal signal, उनकी periodicity। So उसके बारे में ये जो है questions हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और in fact you should solve them because that will give you a grip on these concepts which we have learned in this lecture। So this lecture was about the sinusoidal and complex exponential signals where we have discussed
discrete time sinusoidal and complex exponential signal and continuous time complex exponential signals. इस लेक्चर के अंदर जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं ये मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर भी हम ये हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल यूज़ करते हैं, सो दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट. सो इस वजह से इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस जो है वो इस वजह से ज़्यादा है कि ये वो एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं विच फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स to analyze the more complex signals. So hopefully आपने आज के लेक्चर से ये जो एलिमेंट्री सिग्नल्स के बारे में हमारा लेक्चर था, इससे जो कुछ हम डिस्कस किए हैं, you have learned a lot. So till next time, Allah Hafiz, and take very good care of yourself. Thank you very much.